Wollen wir zuerst mit dem Protokoll anfangen? Also Shebani kann heute nicht im Unterricht da sein, aber ich glaube, Gautam, du warst für dieses Protokoll auch zuständig, oder? Ja. Okay, okay. For today. ठीक है, ठीक. That means Shubhangi and Deepti were responsible for today's protocol. हाँ, Deepti. Yes, ma'am. You were supposed to share the protocol for last class, no? You and Shubhangi. Okay, ma'am. हाँ. So have Yeah. you done that? Yes, ma'am. We have done. ठीक है, ठीक है. So is Shubhangi also joining? No, ma'am. She will not join. But I can share the screen and read that. ठीक है. Thanks. Okay. Deepti, are you sharing? Yeah, are you waiting for Shubhangi? Deepti, are you there? Yes, ma'am. हाँ, शेयर कर Ma'am, रहे हो? I need five. Ma'am, yes, I need 5 minutes. ठीक है, कोई बात नहीं. Okay. Till then, perhaps we can discuss the other question, and that is why most of you have not summarized and submitted the work that was given on Tuesday. And some of Ma'am, you I have have done mailed that. you. Did you get it? हाँ, सुमित, तुम्हारा email मिला है, but actually it would have been better if you had commented directly, ना, so that others could see. But I got your mail and I read that too. Okay, ma'am. हाँ. Basically, all in all, only 7 people did the work. हाँ, हिमांशु बोलो. Ma'am, actually, I've posted recently. Just actually, the thing is, I tried to speak to others, but I was unable to. So that's why it took me so long. But I've posted right now, like 10 minutes before. Okay, not 10, मतलब according to my screen, it's like 2 minutes before the class started. ठीक है. But okay, I mean, you are the only Because of one. network issue, I thought, ma'am, because I don't have the laptop like since Hmm. yesterday. So that's why I've created this in my laptop. चलो whatever be the case, the thing is कि मैंने उस दिन बोला था कि कोई issue हो, कोई doubt हो, you can always contact me, and no one मतलब जिनको problem थी उन्होंने किया था contact the people who said कि they would do the work a bit later, but then none of you, most of you didn't neither contacted me nor did the work. तो ये तो फिर हाउस रेडर हो गया ना तुम्हारा. Ma'am, actually, the thing is, like, when I was trying to summarize it once again, so I have just gone from Act 1 to Act 5. So even I know the summary of Act 5 also. So it took me a bit long to summarize it. So that's you can pretty you can pretty clear get an idea that what I have thought about the act or play in my summary. So you can get a pretty good idea that till what extent I have read and what I have taken all the references from here and there. So चलो थैंक्स, तुम्हारा तो मैं अभी पढ़ लेती हूँ, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल? आई मीन इट्स नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिर्फ डांटने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों नहीं किया काम, बट ऑल्सो दैट अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द पीपल जो बोलते हैं क्लास में, आई डोंट नो अबाउट अदर्स whether they are even understanding what is happening in the shtok or not, no? So it's also, such activities are also a way of pushing you towards actually reading it, and थोड़ा बहुत if not verbally in class then at least written way में input दो अपना, यानी engage with the text. So is there a problem, any specific problem that is going on? मोहम्मद सैफ, तुमने सबसे पहले ओके मैम लिखा था आउफ गाफ में, बट यू नेवर सबमिटेड एनीथिंग. यस मैम, मैं भी पूरा पढ़ नहीं पाया हूँ ना, तो बट इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए और इसलिए मैं नहीं सबमिट कर पाया. हाँ, बट देखो ऐसा है कि ये भी एक चीज सोचने वाली है कि अभी तो हम छोटे टेक्स्ट से स्टार्ट करें, देन हाउ आर यू गोइंग टू कोप विद लॉन्गर टेक्स्ट. एक बार जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर से आई टोल्ड यू कि नॉवेल्स वगैरह शुरू हो जाएंगे,
या इवन आवर नेक्स्ट टेक्स्ट इज अ नॉवल, बट ठीक है, हम बहुत स्लो पेस पे पढ़ते हैं सब चीजें. तो यू हैव टू ऑल्सो वर्क ऑन थोड़ा सा आइदर इंक्रीजिंग योर स्पीड. लेकिन जो मुझे लगता है ये है कि आई थिंक एंड मोमेंट पे, जैसे कि मैंने ट्यूसडे के लिए बोला था कि पढ़कर आना, तो आई हैव दिस डाउट, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, कि देन यू स्टार्टेड रीडिंग द मोमेंट यू गॉट द आउटकम, नॉट बिफोर दैट. दैट इज व्हाई इट टुक यू सो लॉन्ग. तुमने पढ़ लिया था ट्यूसडे तक ऑल द 3 acts, रिमेनिंग acts? और बाकी लोगों से भी मतलब यही सवाल है, इज देयर अ रीजन दैट यू डिडंट सबमिट द वर्क? द पीपल हु रोट टू मी, दैट्स फाइन, बट अदर पीपल? Anyway, the next question is कि have you really now read everybody? Is there anybody, चलो उल्टा question पूछ रही हूँ, is there anybody amongst us who has not read the last 3 acts, मतलब खत्म एंड तक नहीं पढ़ लिया? कोई है हमारे बीच में ऐसा? मैंने पूरा नहीं पढ़ा अभी तक. कहाँ तक पढ़ा है? मैंने 2 तक पढ़ा. दो? तो हमने पढ़ा था क्लास तक. वीकेंड में पढ़ लूंगा पूरा 5 में सबमिट कर दूंगा. नहीं देखो, ऐसा नहीं, सबमिट करने वाला कुछ नहीं है. बेसिकली हमें आज तक सारी समरी पता होनी चाहिए. जैसे कि पेपर ये इसलिए भी था कि जैसे एक्ट 1 सॉरी एक्ट 3 और एक्ट 5 है, अगर हर कोई लिख देता, जैसे एक्ट 4 हिमांशु ने अभी डाली है, पहले लिख देता तो अदर पीपल वुड हैव रेड दैट, सो यू वुड हैव हैड एन आइडिया कि हुआ क्या है. तो चलो बाकी कोई है? निधि, शुभांगी, people who have not submitted anything अभी. Shubhi, I think also didn't. Why I'm seeing voice on my screen somehow. Yes, ma'am. Ma'am, my phone is hanging somehow and I can't log out of it. It will ठीक है, वो be fine in a moment. that is okay. That's not an issue. लेकिन चलो ये बताओ कि क्या मतलब काम नहीं कर रहे हो? Ma'am, I have fever since 3 days. I'll submit. I have read the whole play, but I'll submit it maybe tomorrow or day after tomorrow. ठीक है, मतलब देखो अभी तो there is no, if you want you can submit it, but there is no need now anymore. जितना भी हमारे पास है, हम उन्हीं से भी काम कर रहे हैं. Basically just have to go further with our discussion. ठीक है? Yes, ma'am. Okay. चलो. Perhaps we can begin with the protocol. Yes, What do you ma'am. want to share? Yes. Can you see my screen? Yes, I can see you. Okay. Ja. In den letzten Unterricht haben wir zuerst die Inhaltsangaben des zweiten Akts und danach die Interpretation diskutiert. Inhaltsangaben in der zweiten Akt wird in der zweiten Akt sind sie Anna, Frau Balika, Murg und Babusch in der Kategorie Bar. Anna und Murg benehmen sich romantisch. Babusch und Frau Balika wissen schon, dass Kragler zurückgekommen ist und deswegen fürchtet sich Frau Balika. Schließlich kommt Kragler in die Bar und daher ist Anna überrascht. Anna und Kragler haben sich melodramatisch unterhalten. Inzwischen ihrem Gespräch kommt Murg mit Mari, einer Prostituierte, zurück. Murg und Balika sind gegenüber Kragler so feindlich, dass sie ihn hinauswerfen wollen. Babusch bittet alle, sich zu sitzen, weil nach ihm erst mehrere Treffer vorkommen, wenn alle sich stehen bleiben. Will Kragler seine Ansichten verteidigen. Murg und Kragler kommen zum Streit, wer mehr in den vergangenen 4 Jahren gelitten hat. Damit sie die Entscheidung treffen können, wer Anna heiraten soll. Die Eltern sprechen auch unter, dass Kragler im Vergleich zu Murg Annas Bedürfnisse nicht erfüllen kann.
Wenn Anna und Ragler ein Gespräch haben, sagt Murphy Raglers Stiefel, sie ins Armenmuseum zu behalten. Danach beleidigt Marie Murk. Außerhalb beginnt die politische Unruhe und innerhalb beginnt auch die Unruhe der Ansichten. Plötzlich geht es stiller. Ein Unbekannter aus dem Nebenzimmer fragt den Kellner, was passiert ist, und der Kellner erzählt ihm die ganze Situation auf der lustigen Weise. Später lehnt Anna ab, mit Kragler zu heiraten. Der zweite Akt beendet mit dem Aufstand von Spartacus. जो नंबरिंग है इसकी हमने नीचे इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है. So interpretation kritik des Journalismus Babuschwil, das Kragler spricht, weil nur die Geschichte wissen möchte, damit als einen Journalist viel Geld verdienen kann. Eigentlich hat keine Lust auf die Wahrheit zu entdecken, einen Wechsel herbeizuführen und der Justice überzugeben. Seine Stellung, wer Anna heiraten soll, bleibt unbestimmt. Obwohl Will wegen des Kriegs begünstigt, hat laut ihm mehr gelitten, weil gearbeitet und geschuftet hat, während Ragler mehr gelitten hat, weil als ein Blut einen Schlag gekämpft hat. Dritte, das schilderte Klassenkonflikte Balika und Murk gegen Ragler, Kellner und Marie, das heißt Bourgeoisie gegen Proletariat, wird in dieser Szene können wir ein Mischmasch des Dialogs beobachten. Es zeigt eine unklare Trennung zwischen innerlicher Liebesgeschichte und äußerlicher politischer Unruhe. Es gibt die politische Unruhe wegen des Aufstands von Spartacus und die innerliche Unruhe aufgrund der Ansichtenkonflikte, das heißt einen Konflikt zwischen Privat gegen politisches Leben. Dieser Stelle zeigt der Verfremdungseffekt, um die Ernsthaftigkeit der Szene zu sprechen. Offene Frage, Metapher hinter den Austausch der Stiefel. Warum führt Babusch mit Ragler mit Verbindung zwischen der Liebesgeschichte und der politischen Unruhe? Okay, then you can now change the date to 27 January. ठीक है? Okay. हाँ, थोड़ा बहुत जो ग्रामेटिकल यू मस्ट हैव नोटिस योरसेल्फ बीच में करेक्ट कर रहे थे तुम, ठीक है? नंबर वर्ब प्रीपोजिशन और वो एडजेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. Okay, danke. Gibt es irgendetwas, das die anderen hinzufügen wollen? Ja? And you told when you are reading out the protocol, you want to address me, you are reading out for everybody, ठीक है? So that everybody can see the screen, etc. Okay. हाँ. I mean, perhaps you didn't mean it that way, लेकिन मेरा बस एक ही point है कि तुम ये क्या बोलते हैं, ये नीचे लिखा है ना कि eine Unbekannte aus dem Nebenzimmer, एक Sprachfehler करके तुम ये वाला नीचे लिखा Stille dient als मतलब एक तरीके से spielt die Rolle des Verblendungseffekts. तो वो चीज़ में you have to be clear कि it's not the Stille which is creating that. The Stille is only like a break in between, and then follows the Gespräch. And then the Gespräch itself is the way it is narrated, like it brings forth the finality of the whole situation. Already being brought out by this जो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि the whole setting is supposed to be childish, scenes are childish and all the people are realistic. They are also supposed to play sometimes super cerebral. मतलब the whole thing I am acting, that thing is becoming apparent. तो वो already break हो रहा है, but Stiller is not the thing that is breaking the Verblendung effect. It is the Gespräch through which the whole story is told melodramatic, जो भी flavor है story का, geschichte का, that is being undermined, and then what is being open is also the presence of the your outstand outside, and that you don't know
why is it there? Because the focus is mainly on the love story. What is the outside doing? What's the point of showing that? So they get straight on the way it is being done and the way it breaks. Here the whole जो consistency are having इसमें the whole वो breaking that breaking is not the love. Okay? And it's not like he is narrating it in a lipstick or visor. But the whole situation in itself that it is being narrated. You're right, he is using certain words undermining the seriousness of the whole situation. तो वो हो ही रहा है वो lipstick or visor, but the fact that he is narrating it all to somebody else, that's वो है बन कर रहा है दस तरीके से just it's नाला हाँ बैठिए हो गया उठाता ठीक है Okay. हाँ but I think the rest of it is good. So I put this protocol. That is Okay. And then nicht you can have and then fill it here as one comes to outfluence and green time. okay. Okay. Danke. Coming to today's class, the idea was that every act में से सबने कुछ लिखा और सब का कितना हिमांशु बोलो. Actually, me and Suraj are also supposed to present our protocol today. So Achha. if you want to just upload it, actually I've already uploaded on it. Right now. Yes, ma'am. Or do you want me to read it once again, or can we continue it after once we are over with these three acts? हाँ मतलब basically I think it's too late to discuss अभी ना थोड़ा break या तो पहले discuss कर लेते या perhaps we can read let me see वो किस चीज़ के ऊपर है. Is it about the same text? It's just about the introduction which we have did now in class. अच्छा somehow I can't see the let me just refresh it. अच्छा sorry let me have a look. Perhaps we can discuss it so that other people can give their inputs and if there is any change to be made, we can do it and then upload it again. Okay, so basically upload final discussion के बाद final version सब upload कर देना क्योंकि वो mark होगा ठीक है. So this is for everybody. We uploaded it right now. हाँ that is okay. You can just read it out, you share it. I would suggest that you share it and you read it out, and others can have a look and if they want any suggestions, give any suggestions, and you can just and if those suggestions are valid, then you can make those changes and re-upload it. That is not a problem. So I'll take the second version if there is any change. Ma'am, it will take 2 minutes to share my screen. Actually, the laptop is not starting right now. ठीक है तो वो करो मतलब I'm trying to share the screen. मैं खुद ही कर देती हूँ. Okay, ma'am. Is it visible? Yes, ma'am. Just a minute. I'm sorry. Do you want to share it? Should I stop sharing? No, ma'am, it's okay. If you're sharing it, it's perfect. In the lesson class haben wir das Drama vom Himmel Namen besprochen. Unser Lehrer sagte uns, wir sollten unsere Gedanken einüben zum Text aufsehen. Dann fragte sie uns nach dem Unterschied zwischen einem Drama und einem Theaterstück. Dann erzählte sie uns von der Autor. Bertolt Brecht war ein deutscher Schriftsteller und Regisseur. Drums in the Night ist ein Theaterstück vom Himmel nach DB 1919 von Bertolt Brecht. Geschrieben. Das Stück wurde 1922 in München aufgeführt. Es gibt 5 Akte in diesem Stück. Es war auch ein Comedy-Stück. Das Stück spielt 1919 vor dem Hintergrund des Spartakus-Tanz.
Es gibt viele Hauptfiguren in diesem Stück. Da sind Fellow and Elias Krager, Babush und weitere Personen. Wir haben auch über die Charakter im ersten Akt des Stücks gesprochen. Anna und Andreas sind in ein Anbefehl. Elias Krager war Soldat, war während des Ersten Weltkriegs in Afrika und seit 4 Jahren vermisst. Deswegen Annas Eltern brauchten sie nur sie heiraten. Sie wollte ihn nicht heiraten, aber als es der Umstände denkt sie so. Es besitzt in der Familie Brüder erweiterte nur sein Stamm während des Ersten Weltkriegs. Aber war Wirtschaftsjournalist. Gleichzeitig kehrte der Soldat nach 4 Jahren auf die Flucht zurück. Mit einseitigen Lebensfluss wurde er von seiner Studentin erwartet und verlassen. Bestreitet den Klassenkampf und glorifisch und gloriös. Er tolerierte den Extremismus und schon während alle wichtigen Elemente davon abdeckte. Okay, danke. पहली बात तो in the last line, एक तो मुझे what do you mean by Liebesfluss? I guess. With anticipating in the Liebesfluss, you mean to say where results one of the lead is eher von seiner Person verraten. Authority like it projects or it displays like some visuals of expressionism, like beautiful references you use like in the midst of it. Like we have just like read about this word like we have like I just spoke about this and it's just so mention it in our text whatever we have discussed that I just put it down. If you like if I have to remove it, I can talk about it. I was getting echoed. Perhaps other people can help me out as well because I forgot to whatever what did we discuss. I think we did discuss a bit about feminism and how his drama translates the expressionism. No, not in detail, but still. So other people, any hints any comments? पहली बात तो रेयर इन but you don't दो चीजें बता रही हूँ मैं एक तो प्लीज गो थ्रू द और एवरीबॉडी जिसमें मैं मेंशन कर रही हूँ कि ग्रामर में टेक्स्ट है प्लीज गो थ्रू द मटेरियल एंड चेक कहाँ है और उसको ठीक करो इन योर टू मतलब मैं ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ कि किधर है बट यू कैन सी देयर इज नीड टू जस्ट गो थ्रू इट अगेन एंड वो थोड़ा उसको करेक्शन करो हाँ दूसरा ये व्हाट इज दिस पहली बात बट इन एनी केस हाँ तो खैर ये तो खैर फेयर है फ्रॉड की जगह फारू हुआ और तुमने बट even apart from that you don't need to write Frau. पहली बात तो in German you write Frau now to write Nachnamen and then you are breaking a rule here. I will change this from earlier protocols because since I have written for the very first time, so I didn't know that what are the things. लेकिन एक चीज और है one simple thing that you simply remove Frau. I write my name or first name alone that suffices or write my full name but don't need to write Frau. क्या I'm a bit against that. तो आगे से मत बोलना कोई बात नहीं. हाँ. So coming back to the protocol and this question for the other people what do you want to add to it or improve in it एक चीज जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे the same thing from the night and attached to why do you use the English version get that I've shared that for your own help but you don't need to refer to it from in the night you from Indian you know okay the other people I have some doubt regarding the last 3 or 4 lines. Can I ask you right now? हाँ we can come back लेकिन उससे पहले तुम्हारी मेरी आवाज तुम्हारे से इको हो रही है
चलो मतलब we can come to that, and then after that जितना मुझे याद है मैं ऐड कर देती हूँ, अगर दूसरे लोगों को कुछ याद आता है तो वो भी ऐड करना। हाँ बताओ, लास्ट थ्री लाइन्स कौन सी बात कर रहे हो? I'm actually looking at, like as you know, since like master students, like as I don't have such kind of a specific command on this language, so first I have written in English last four lines. So ma'am, what I was trying to say in this, like with the steady flow of love, he was betrayed and abandoned by his fiancée. So do you think the structure formation of these sentences is correct? Last two or last three lines? The grammatical structure is correct. Mm-hmm. Grammatical structure is correct. But you are saying he was betrayed and abandoned by his fiancée. but I would Yes, ma'am. हाँ देखो again I'm saying grammatically it is correct. The reason I asked is even in English I would ask the same question. What do you mean by steady flow of love? क्या है? That is something I didn't understand. No? I'm like steady flow of love is like kind of like he was on board, so he kept his feelings alive for her. So it's kind of like that. So I wanted to take your views. Is it correct information, or should I just rewrite it again, like last two three lines, or should I just remove it? You have to check कि क्या कहते हैं whether such formulation is used, because I think it's pretty awkward. Sounds awkward in German to call something stetiger Liebesfluss. Instead of putting it that way, staying true to your own language, you can be a bit क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर सिंपली राइट कि obwohl seine Liebe immer noch क्या बोलते हैं lebendig bleibt, या obwohl er immer noch in sie verliebt ist, या actually in sie verliebt नहीं है, er liebt sie, ne? Obwohl er sie immer noch liebt, हाँ wird er von sie verlassen या जो भी है, but actually तो she also loves him, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? And तो ma'am, you what can about the do that. last? What हाँ about the बोलो. last line? Like he portrayed expressionism beautifully while covering all the important and हाँ major that is तो elements. inherently problematic ना, तो हमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? Okay. It's not about portray clear के बजाय you can use Darstellen, हाँ Okay. या hervorbringen या जो भी तुम कर सकते हो, लेकिन coming back to the inhalt, ठीक है, which is more important अभी at the moment. What do other people have to say to this? एक तो I think I'm just remembering वो, बाकी सब तो ठीक है कि ये एक तो I think I wrote कि ये since it is I mean, Thrommel Nacht was later on decided, but initially the very first time he wrote it, the Stuk was called Spartacus, है ना? That was the title of the Stuk. बाकी सब तो correct information है, यहाँ पे कोई problem नहीं है. ये वो भी सब ठीक है. I think we talked a bit about what, and this comedy Stuk के बजाय simply write comedy. ठीक है? You have just like you have tragedy, you don't need to write it as Tragödie Spiel or a Tragödie Stück. Komödie ist genug. ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली अ कॉमेडी, नॉट अ ट्रेजेडी. Okay, and as far as I remember, we did talk a bit about Brecht's contribution to literature, and that was his, if somebody else can also point that out, this epische theater, or was that in the next class that we discussed it? I think we discussed it during the very first class, no? When we discussed this text, no? Actually, ma'am, we just discussed this term, so I was हाँ wondering, should I add it, or like, or हाँ should I बिल्कुल. add a bit context of it? Like, So you what don't is need it? to, हाँ you don't, you can, because we did talk about it कि एपिशस थिएटर का पूरी हिस्ट्री में मत जाओ, but you can if simply say this, and this is where your last line comes in कि vis-a-vis expressionism का theater which was, or bürgerliches theater basically, ठीक है, which was at the height during this time, actually according to Brecht it was dying out, ठीक है, तो it was already going away, and his I mean Brecht was central to the literary field auf der Ebene der Welt, ठीक है, not only in German literature but पूरी दुनिया में, because he brought forth this apicious theater वाला thing, and which is pretty different to expressionism है. तो ये that you said कि हाँ ही wunderschön तरीके से उसने expressionism को darstellen किया है, ऐसा है ही नहीं, it's the opposite. I mean the very setting of the Stuck is it denies, it basically rejects expressionism in that sense. No? It satirizes expressionism to some extent.
Yeah, I think we discussed that. I mean, perhaps not in the very first class, but we did because first act में ही आ रहा है ये mond वाला और ये dramatic वाला, and that it is breaking. And did we discuss the first act in the? Deepti and Shubhangi discussed the second one. I think the first act itself was discussed in the फर्स्ट क्लास, ठीक है? तो उसमें हमने ये सब चीज़ें भी डिस्कस की थी किस तरीके से वो बीच में टूट रहा है उसका, ठीक है? तो ये यू हैव टू करेक्ट दिस लास्ट पार्ट एंड यू कैन अपलोड दैट अगेन देन आफ्टर आल्सो करेक्टिंग सम ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स कि एपिशस थिएटर जो है ब्रेस्ट का वो किस तरीके से फ्रेमडुंग्स इफेक्ट के थ्रू द होल मेलोड्रामा ऑफ एक्सप्रेशनिज्म एंड दिस वुंडरशोन तरीके से जो स्टेज की इलैबोरेट सेटिंग होती है इस चीज को उसने ब्रेक किया है, ठीक है? इस स्टुक में दिस इज एन अर्ली although see this stuk is not to be seen as a muster by this in this case that drama is fun. The setting is so elaborate, much because expressionism was taken very seriously. I'm not saying it was realistic. It was not realistic. Actors is realistic. The people who are here, they are not some ideal people. They are all people, all including this will discuss today. They are pretty realistic, but the setting on the other hand पीछे इधर Kindle Weiser में मालन किया गया है, if you remember that. हाँ, Kindle मालन किया है, model को expressionism in that sense. ठीक है? So ये you need to understand this. Do you understand that? Yes, ma'am. ठीक है? तो you make corrections here. बाकी I think the other things are there already. ठीक है? Apart from this, in visits their familiar burger. What is burger? Is it mentioned there somewhere? Perhaps have missed. Ma'am, are you asking to me? हाँ. Ma'am, actually, I was not getting a correct word for like this middle class family. अच्छा, वो तो हाँ. So that's why I was like, yes, ma'am. That's bourgeois, ठीक है? You can say burger. This is like the English word of burger, लेकिन I think bourgeois is a better word to use. B-O-U. ठीक है? You find the spelling out there. R-G-E-O-I-S-E-I-E जो भी है, bourgeoisie या bourgeois, depending which word you want to use. ठीक है? Okay, ma'am, I'll be right. You have already used this. Yeah, that's why I was like thinking which one is the correct. So that's why. So that's why I just. I think bourgeoisie is more. I wouldn't say that is wrong. Okay. But bourgeois is more widely used. ठीक है? Okay. So I'm unsharing the screen now. If there is no other input from other people, have I missed on something? Okay. Also dann gehen wir mit dem Stück weiter. Jetzt hat auch Himanshu und vielleicht, ich weiß nicht wer noch, aber der vierte Akt, also wir wissen jetzt auch etwas über den vierten Akt. Also die Aufgabe ist jetzt, ich habe die anderen also Beiträge schon gelesen, aber also Himanshus lese ich jetzt. लेकिन काम सिर्फ इतना है कि you just read one, जिसने obviously third act में कुछ ज़्यादा ही लिखे हुए हैं, तो third act में से you choose any to read it, unread the others. ठीक है? जैसे तुमने अगर फोर्थ पे लिखा है तो तुम थर्ड और फिफ्थ का पढ़ोगे, किसी ने थर्ड का लिखा है तो वो फोर्थ और फिफ्थ का पढ़ेंगे. And ich gebe dafür so 10 Minuten Zeit ist zu viel oder ist in Ordnung? 10 Minuten, although I think 5 minutes time is also fine, but ठीक है, 10 Minuten Zeit dafür, dass ihr die Kommentare anderer lest,
einfach festzustellen, was so insgesamt in der ganzen Geschichte passiert. ठीक है? Und danach können wir mit unserer Diskussion weitergehen. ठीक है? अब since I mean I'm just remembered गौतम तुम कह रहे हो ना तुम प्रोटोकॉल आज लिखोगे गौतम are you there? हाँ तो you said ना कि you would write the protocol for this time. हाँ but Shivani is not going to she's still going to write with you or somebody else wants to write with you? अच्छा एक सेकंड हाँ so मतलब perhaps somebody else can take responsibility instead of Shivani somebody else can pitch in with Gautam. Ma'am, I can write with him. Who is it? Himanshu. हिमांशु तुमने बोला है Yes, ma'am. हाँ ठीक है okay also ich gebe euch so 10 Minuten Zeit um die Kommentare anderer Leute zu lesen ठीक है und wir sprechen dann um 15:20 Uhr weiter
Ma'am. बोलो. Ma'am, actually, in my summary, I was not able to mention the conflict term, which I've seen in everyone's else, whoever have posted on the in comment section. So I don't know what a conflict is. So once when we'll start reading, can you just let me know what हाँ, do we we will. mean? Okay. हाँ, ठीक है, we'll discuss it because if whatever else you have written that needs to be discussed as well and एक बार हम act by act आगे जाके और फिर पूरे स्टोक को एक बार डिस्कस कर लेंगे और obviously conflict से related. ठीक है.
Okay, habt ihr gelesen? Yes, ma'am. Die anderen auch? Leute, seid ihr da? Hört ihr mich? Yes, ma'am. हाँ, पढ़ लिया सबने? Yes, ma'am. ठीक है. So, we are going act by act and just at least finish it on the level of the inhalt. I'm not repeating what is happening in the act. It's there for you to see. The people who are responsible have also, I mean, most of the people in group 1 have submitted their inputs. Is there anything that you want to add to that? Or do you think somebody has misunderstood something? Whatever you have read in the first मतलब act 3 के comments में. अभी हम कॉन्फ्लिक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं. Ich meine nur Zusammenfassung. Ich glaube, I think हाँ बोलो. Shivani has covered all the major aspects of the act. I हाँ. don't think so that anything is left. Specifically, if I read Shivani once, maybe the others they have some like left information here and there. जैसे कि Ma'am, like Shivani has like properly mentioned wait ma'am. ओके, नो इश्यूज. हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? यस मैम, जैसे कि शिवानी, मैंने उसमें नहीं डाला था कि वो प्रेग्नेंट है, वो उसको रुकने के लिए कहता है, बच्चे के लिए रुको. हाँ. जी मिस्टर आउकिन बेबी मिट मुर्कनिस्ट, क्या मैम, वो सब मैंने नहीं डाला था. हाँ. चलो इट्स नॉट अबाउट कि तुमने क्या डाला क्या नहीं, बट ठीक है. मतलब बेसिकली ja, Shivani hat das gut zusammengefasst und nur ein paar Punkte fehlen bei ihr auch. Und ich glaube, Trishula hat das so vielleicht beiläufig, sie hat das nicht direkt hingewiesen, aber zum Beispiel, dass der Titel Walküren Threat oder Red, war das Red oder Threat? Let me just check again. राइड था कि आई थिंक राइड ही था. आई एम जस्ट मिस्टेकन बट आई एम जस्ट चेकिंग इट एनीवे. हाँ, रिश्तेश वालक्यूरन रेट. ठीक है. सो that was the title which was missing in Shibani's wo, I think. And also one more, forgotten which one. These are Sache mit den zwei Männern. Das fehlt bei Shibani auch, glaube ich. Ja, das spielt schließlich auch eine Rolle, ne? Selbst wenn das uns nicht klar ist, aber es gibt inzwischen zwei Männer, der eine und der andere. Ne? Okay. But ठीक है, I think most of the people who have covered Act 3 have covered it well. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem Inhalt von diesem Akt? Oder können wir weitergehen? ganz kurz gesagt, यही हो रहा है यहाँ पे कि मतलब you have read it all this already कि she is going out now to look for Kragler. She has already decided that she is egal. मतलब किसी ने I think ये लिखा कि baby or so what abortion वाली जो चीज थी. This is not very clear. It's just that baby is not going to stop her anymore. Nothing is going to stop her. So she is not letting that be a reason. And in this act, basically, although we knew it because I told you already, but this is the first time that we get to know as Zuschauer that this is the reason she didn't want to go back to Kragan, because she's pregnant. But now she's decided to go back anyway. Ma'am, if I'm not wrong, but, this point is mentioned now that something regarding abortion or miscarriage in the act. Is it mentioned?
Ma'am, I think whatever I have understood, like not exactly miscarriage or abortion, but yeah, in terms of that only, like she is not confirmed whether she'll be going to do that or not. But I think it is present over there, I think. A second, let me just look. You tell me on which page is this? Ma'am, the thing is, it's not just about this page. Ma'am, because I've just joined this like Google Classroom on like I think 1 or 2 days back ago, because I don't know that your page is, your classroom is different from others. So I was not aware of that. So I was just looking at the internet of different German translations, whatever they have done. So in that context, I have read it somewhere. So that's why I was just concerned when you said this point again now, whether it was not clear. So that's why I just want to get it confirmed that is it like that, or maybe I have read some another interpretation which हाँ is not देखो, so. इट्स नॉट इंटरप्रिटेशन, इट्स वेरिएशन. वेरिएंट्स जो है तो ऑब्वियसली जैसे जो मैंने शेयर किया था तुम्हें, दैट ड्रम्स इन द नाइट वाला जो पीडीएफ फाइल नहीं है तुम्हारे, इसमें पता नहीं क्या पीडीएफ Yes, ma'am. कॉपी कुछ लिखा हुआ है. I've हाँ, तो yes, उसमें ma'am. देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स, बट यू डोंट, मतलब यू शुडंट कंफ्यूज वेरिएशंस, जो वेरिएंट्स जो हैं विद ट्रांसलेशंस. दे आर नॉट नेसेसरली ट्रांसलेशंस. दे हैव एडेड समथिंग ऑफ देयर ओन इन दैट. ठीक है, they have changed bits from here and there. So we are reading one, even Brecht has made changes, ऐसी बात नहीं है. तो क्या कहते हैं, जैसे there is a song in that English variation which is not there in the German one, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, the whole version is not there in the one we have been reading. And another song, वो तुम्हारा जो Zoldaten वाला है, forgotten the title, ठीक है, but it I've was added mentioned later. both of them. हाँ, but it was, it's not part of the variation that we are reading. But anyway, but you are partially correct that here it is not clear. अब जैसे I'm just sharing the screen of this particular text, but जो दीप्ति ने link share किया, if you want to, उसमें कोई mistake नहीं है. It's just that you, in whichever form you try to download it, EPUB या PDF, it gets distorted. So if you want to read it online, there you can. तो यहाँ पर इसमें है ना कि she is that is the first time. Das andere willst du nicht, das ist der Strick. Und er hält dich nicht, jetzt ist er los. What is happening? This is the first time that we are even getting to know that she is pregnant. It's only because I told you earlier कि हम तो पहले पता चल गया हमको, लेकिन otherwise this is the first time and dieser Stelle, ठीक है, that we get to know कि she is pregnant. So that's why she's saying things like this. Jetzt ist er los. बता रहा है, ये बोल रहा है, das andere quote unquote, und तो it's not very clear कि sie will das Kind nicht, heißt sie will das Kind töten. Only that the Kind is not going to stop you. Dein Kind ist dir gleich, es ist mir gleich. This is perhaps the Stelle that you're reading as sie will ihr Kind verlassen oder sowas. Aber and perhaps also because I also related to हम Pepper के बारे में बात कर रहे थे last time, perhaps that was supposed to help her to kill the child, perhaps, but it didn't work. है ना, यही है ना, it didn't work. So it's not like she's going to throw her baby away. It's just that in any case she's not making that into an issue. Despite the fact that she has a child, this is not going to stop her from going back to Kragler. This is one point that you shouldn't misunderstand. Okay. तो ये एक चीज है, but it's a small thing. Anything else that you want to discuss in this act? It's a small act. या इसके ऊपर मैम तो एक यहाँ पे है मुटर फार्म मुटर माथन डी ऑक्साइड नाइस अनइनिस्ट. इसका मतलब मैम एक सेकंड, कहाँ पर है? Am I on the right track? पहुंच गई मैं. या Can you tell me the page number of the PDF? बस इसके ऊपर ही मैम 60 ऊपर. Yeah. Yeah. Okay, der Vater und die Mutter machen die Hochzeit. Ich kann es nicht. So? एक यहाँ समझने के कहना क्या चाहिए क्योंकि der Vater und die Mutter machen die Hochzeit. हाँ, इसका मतलब they are in the sense कि they are preparing for the wedding, but she is saying no, I can't, because that is what she's been saying throughout. ना इसमें this is the reason we've already bought the linen, etc., etc.
and she is like egal, लेकिन अब मैं नहीं, I can't do this anymore. हाँ, इश्कान ist nicht. ठीक है. Yeah. हाँ, तो बोले जा रहा है ना कि die Wäsche ist gefaltet, aber die Braut ist zum Anker. Die Wäsche ist gefaltet, aber die Braut kommt nicht. Okay. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है इसमें इनहल्ट में? What about the two people जो मतलब I think बहुत कम लोगों ने मेंशन किया है? They I know they are under a where is the loiter? Oops. If I'm on, yeah. You have your Kragler and your कौन है अपनी दूसरी मारी, ठीक है, वो तो हो गया, आके चले गए, बट दे आई नो दे अंडर zu welcher Schicht gehören sie? I think Augusto. बेटा Augusto. नहीं no, they are obviously two different men because sie machen क्या बोलते हैं इसमें ये they are urinating here ना, and they are saying कि मैं आगे जाके नहीं कर सकता तो यहीं पे काम खत्म करो. But if you look at the kind of discussion that they're having, right? But इसको discuss करके we can move on to the next. What are they talking about and who are these people? Obviously they are not Augusta and they are simply two strange men. ठीक है, they are, this is the only place that they are coming up in the Shtuk. They were talking about the Bolsheviks. हाँ. And obviously they're also talking about the Aufstand that is happening in that newspaper place ना, जो आगे चल रहा है, जहाँ पे तुम्हारा वो गया है, Kragler and Mari जिस डायरेक्शन में गए हैं मतलब. And are they the proletariats? Machen sie mit? Oder wer sind sie? Ma'am, I'm just confused in between third and fourth act that where this scenario is happening in the act. Like there is a scene like when the police forces and the proletariats and they are fighting regarding like behind newspaper halls, something like that. Is it regarding to those things like these two characters? हाँ देखो वहां पे तो फाइट चल रही है न्यूज़पेपर ऑफिस में. द मतलब जो स्पार्टाकुस के लोग हैं, दे हैव ऑलरेडी. कैन यू म्यूट योरसेल्फ? तुम्हारे मेरी आवाज इसमें म्यूट हो रही है ना, इको. हाँ, सो वहां पे ऑलरेडी चल रही है फाइट. यू आर राइट अबाउट दिस. ठीक है, दे आर नाइदर द पुलिस नॉर द वर्कर्स हु आर फाइटिंग. ठीक है, द वर्कर्स आर एक तरीके से रिवोल्टिंग इन द न्यूज़पेपर ऑफिसेस एंड देयर इज परहैप्स पुलिस रीचिंग देयर एंड फाइटिंग देम बैक. ठीक है, बट दीज पीपल आर बिलोंग टू नाइदर ऑफ द फैक्शन एंड दे आर, जैसे कि तुमने बोला कि दे आर टॉकिंग अबाउट बोल्शेविक्स. हाँ बोलो. Maybe these people belong to this bourgeoisie class. हाँ, and how do That's you know why they this? are talking. That's why they are talking about the Bolsheviks, because Bolsheviks were the proletariats and they revolted against the government. They are basically referring to the Russian Revolution that was happened at that time in October in 1917, हाँ. and this Bolsheviks party represented themselves as the democrats of the proletariats. हाँ, बट जैसे कि तुम्हारा भी कमेंट है कि आई मीन आई आस्क यू लेटर व्हाट यू मेंट बाय दैट, लेकिन ठीक है, मतलब बोल्शेविक्स आर नॉट नेसेसरली प्रोलेटारिएट्स themselves, but they are fighting in the name of proletariat. They are for proletariat. You're right, and that is in Russia. Obviously, this is a German revolution inspired by that, and workers are revolting against the war that is happening, and a lot of other people are also. This is my German Democratic Party, etc. They are not German, हाँ, Deutsche Demokratische, नहीं, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी जो है, वो सब मिलके दे आर द वंस हु आर आल्सो initially supporting the workers revolt against the Krieg that was happening under the name of empire and for capitalistic तुम्हारा जो आगे बढ़ रहा है सब कुछ. ठीक है, तो वो तो चल रहा है, but how else? You are correct that they are the bourgeois somewhere along those lines, and how do you know that? By their
एक तो of course by their approach towards the revolution which they are not bothered by it, they are simply saying कि अच्छा यहीं पे रुक जाओ, वहां तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो तो है ही, बट एट द सेम टाइम दे आर लाइक टीजिंग ईच अदर कि तुम तो मारे जाओगे वहां पे, ठीक है, जैसे कि ये, और ऑब्वियसली दे आर आल्सो द पीपल हु हैव डन मिसडीड्स लाइक गलत gefälschter methyl बांटी है, या ये किया है, वो कि gefälschter tabak, तो इट्स लाइक दोज काइंड ऑफ people who are selling such things, other things, fooling people and making money kind of people, ठीक है, was ihnen das schon hilft, allein werde ich nicht gehangen, ठीक है, तो they are calling out each other's crimes, and also they are saying कि wird ihnen schwindlig, मतलब just saying geht ihnen etwa nicht die Luft aus, so yeah, they are like teasing each other, sie riechen ja schon, oh Gott, feine Sache, wenn sie mit ihren steifen Hut hinkommen. The steifen Hut is itself a symbol of the bourgeoisie, ना, तो क्या है कि तुम्हारे तो स्टाइफन हुट से ही पकड़े जाओगे वहां पर, सामने तुम्हें मार दिया जाएगा, sie haben auch einen steifen Hut, and he's saying you also have a steifen Hut, aber mit einer Dole etc, तो and other things, ठीक है, कि क्या कहते हैं, sie haben Knopfstiegel, Stiefel, Entschuldigung, sie haben steifer Kragen, तो all these Aussehen जो है, this is all stereotypically attached to the bourgeois, ना, तो that is what ये ब्लैक ईयर एंड एटसेट्रा, तुम्हारा जो आगे भी बातें की गई, ठीक है, कि तुम्हारी तो शक्ल से देख के लगता है कि यू हैव अ मिटल शोल बिल्डिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, so through this also you get to know that these are bourgeois people, just like we'll come back to जो हम बात कर रहे थे Kragler being proletariat because of his, उसका आउजेन पे भी बहुत वो है ना कि has a Schwarzes Gesicht now this and that, हाँ, मोटर तुम्हारा ये क्या कहते हैं, खराब हुए कपड़े एटसेट्रा, ऑल दैट स्टफ, ठीक है, तुम्हारा जो स्टीफल है उसके अच्छे स्टीफल, उसके क्रीग में खराब हुए जूते एटसेट्रा, ठीक है, सो दिस इज द थर्ड एक्ट. Is there anything else that you want to talk about in third act? But overall we understand it was not difficult. This was a kind of short act, and Brecht also said कि इसको छोड़ा भी जा सकता है. हाँ बोलो. Ma'am, apart from this, like this bourgeois like term which we are using for those people, I think that Piccadilly were consisting of only like those kind of people. I think I should name them as capitalist if I'm not wrong, because Murk belongs to that family only, I think. हाँ हाँ हाँ, तो पिकाडिली बार अपने आप में ही, yes, that's true, it consists of those kind of people. It's pretty clear in the 2nd act also, ना, कि I mean there is this tension between a Kellner working there and Marie जिसको वो लेकर आता है, both of them belonging to the lower class, and the guests there are obviously high end people, ठीक है, the middle class, upper middle class, so you're correct. बट इफ यू आर सेइंग कि जस्ट बिकॉज वो पूरा एरिया में सिर्फ बूर्जुआ होंगे तो ऐसा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर अदर पीपल वॉकिंग अबाउट, देयर आर द रेवोल्यूशनरीज हु आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन. Ma'am, just about the Piccadilly bar. अच्छा, दैट इज ट्रू, बट दैट वाज, दिस एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट पिकाडिली बार ना, बट यू आर राइट अबाउट दैट. ओके, वॉलंटियर. इसमें एक वो हाँ बोलो. क्लाउड वाला एक पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है? दैट वाज दैट इन दिस वन. हाँ, वो कॉन्फ्लिक्ट में ना, मतलब मेंशन करा हुआ है कि बाबुश और उसके बीच में, मानके के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कुछ ऐसे ही होता है कि क्लाउड से रिलेटेड कुछ बात कर रहे होते हैं, फिर वो उससे कहते हैं कि हाँ तुम वेटर हो, वेटर की तरह रहो. हाँ, ये 2-3 लोगों ने ये बात मेंशन की हुई है. एक सेकंड, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड द स्टेलर. हाँ बोलो. Ma'am, actually, I was not able to get the meaning of the cloud, but at the end of the Act 3, the waiter was supposed to like kind of informing Anna that you should leave for that particular thing, or else you both of you will lose everything for forever. So that's why I think Babush makes a comment on him that why. मतलब how can you make such kind of a remarks for her, or how can you suggest as you belong to a lower class? मैम वो ऊपर चला गया पॉइंट. अच्छा, ऊपर चला गया. हाँ हाँ, यू आर, देखो एक तरफ से तो यू आर, बट आई डोंट थिंक ही इज टॉकिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट. यू मतलब ही परहैप्स ही सेज एट सम अदर प्लेस. वेयर इज इट? बट आ गया. हाँ, किधर है? ये रहा. Babush jetzt geht mir ein Licht auf, Mann, also in dem Weiler Fischen. ये वाल्कन. ओ नहीं, नहीं, ये तो वालक्यूरन
read है ना, and I hope हाँ you नहीं, हाँ this there is a reference to that ये रहा ना older myth. विंड की तरह जा रहे हो मैम, जिसमें वो बोलता है कि बादल से भी तेज जा रहा है क्लागलर, रोक हाँ लो हाँ उसे। हाँ, नहीं वो उसका वो मतलब नहीं है एक्चुअली. Let me just open the link that you shared. Perhaps उसमें बेटर तरीके से ढूंढना आसान होगा थोड़ा सा. बट हाँ उसमें बेसिकली ही इज टेलिंग, कौन है अपना ये मूर्ख, मूर्ख को बोल रहा है कि तुम इस चीज को इतना हवा क्यों बना रहे हो, जस्ट मूव ऑन. ठीक है. क्या बादल रुक, मतलब तुम मतलब बेसिकली मूर्ख को मांग को ये भी बोला गया ना कि मूर्ख को लेके घर जाओ. एंड मूर्ख ऑल्दो ही इज कंप्लीटली बिजोफन. जस्ट अ सेकंड, आई एम ट्राइंग टू फाइंड दैट स्टेलर. या मैं इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. किसी और को भी मिल जाता तो प्लीज बता दो, सो दैट वी कैन सेव टाइम. अदरवाइज तो इसको ढूंढने में ही चला जाएगा. इश्कान मैंने आई थिंक इससे पहले था ये सारी बातों से. यहाँ पे कहीं होगा. कुछ ज्यादा ही ऊपर शायद चले ये वाला गए. मैम, वास बाबूस, वास गेट das eigentlich sie an, was gehen die Wolken sie an, sie sind doch Kellner. हम्म, 58 के ऊपर शायद या ठीक है. ठीक है. सो आई मीन यहाँ पर बात हो रही है ना, मूर्ख अपाथिश एस फार फार बाय इंडेम्पोज, मतलब इज बेसिकली सेइंग कि आई एम नॉट ड्रंक. ठीक है. एंड येट वो alles fatisch ist, die Wäsche beisammen, die Stuben gemietet, kommen Sie zu mir, Bab. ठीक है. तो he's like being melodramatic about his loss या impending loss. Was stehen Sie da wie Lot's vibe, मतलब this is a reference to the same वही कहानी जहाँ से तुम्हारा विल क्यूरेन थ्रेट, आई थिंक, मतलब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, समबडी इज अवेयर ऑफ द स्टोरी कि तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो. ठीक है. दस इज काइंड का बोल, दैट वाज अ सिटी. हाँ तो तुम क्यों इतना रो पिट रहे हो. ठीक है. ये मूर्ख को कह रहा है मांग. इम्पोनियट ihnen das besoffene Elend, does it impress you? हाँ, does it mean so much to you कि ये दुख दर्द जो तुम जिसकी तुम बातें कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो. können Sie noch anders herum, ist das die Wäsche? Bleiben die Wolken deswegen im Hintertreffen? Ist das das, मतलब what is stopping you from moving on? Why are you being so melodramatic about your loss? Manga is saying this to मूर्ख. ठीक है. कि क्या ये इन सब चीजों से क्या वॉल्कन भी पीछे छूट जाते हैं, तो जस्ट मूव ऑन इज व्हाट ही इज सेइंग टू मूर्ख. हाँ, जस्ट गिव अप ऑन आना. एंड उस पे बाबोश कह रहा है, was geht das eigentlich sie an, was gehen die Wolken sie an, in the sense जो भी है बातें, who are you to talk like this, sie sind doch Kellner, इन सब बातों से बाहर रहो. ठीक है. Was das mich angeht, Sterne entgleisen glatt, wenn ein Mensch einer Gemeinheit kalt lässt, greift sich an den Hals, ich werde auch davon gejagt. मतलब he's saying कि I also feel it, I am not that kind of, मतलब I am not outside of this pain, I understand, वगैरह वगैरह. तो he's also saying ना कि मुझे दुख होता है जब कोई बंदा ग्रूंड आइज में गेन करता है, एंड ही इज सेइंग दिस अबाउट मूर्ख कि ऐसा नहीं है, मुझे उसके लिए दुख नहीं है. ठीक है. तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन एब्सोल्युटली से समथिंग अबाउट इट. एंड टू दिस बाबूश इज सेइंग ना कि ग्रूंड आइज नहीं है तो अभी देखना कल तक चलता फिरता होगा, ये होगा, वटेवर वटेवर. ठीक है. जो भी सब बातें यहाँ पर. ठीक है. दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट हियर. ओके. इज देयर एनीथिंग एल्स इन दिस एक्ट? Dann gehen wir doch weiter zum Akt 4 und Himanshus Beitrag ist der einzige, den wir haben. So, was hält ihr davon?
Die anderen haben sicherlich auch diesen Akt gelesen. Gibt ihr Fragen zu diesem Akt? Hier, was passiert hier? मैं एक बार चेक कर रही हूँ. Who else? Is there anybody? Or a lot of people have verschwunden actually. आज. So only 9 people left. So Act Fear के लिए Shari was there initially. Is she there now, or has she left? Ajay, Yes, ma'am, I'm there. अच्छा, I'm sorry. ठीक है. I'm ठीक है. just listening because I'm down with COVID. अच्छा, okay. चलो, take care. I think you wrote Yes, to ma'am. me regarding this. Yes, ma'am. हाँ, that's okay. But अजय भी आया था या उसने कुछ लिखा भी था, पता नहीं कहीं और लिखा था, I don't know. Ranjan is not there. Chitwan and Shubhangi has also disappeared. Or is she there? Deepti, Shubhangi कहाँ गई? She has left the class. She's not at home. अच्छा, ठीक है. So other people, I'm assuming other people have also read it. ठीक है, तो बताओ कि is there something that you want to add to Himanshu's account of Act 4? Was passiert im Akt 4? कुछ बातें हिमांशु ने लिखी हुई हैं कि it's like it's another bar, by Globe. ठीक है, Globe is the, I think, bartender. Es gibt noch mehrere. हाँ, बोलो. I'm more like a owner, I guess. हाँ, ठीक है. मोस्टली बारटेंडर्स, ठीक है, अभी तुम आज के इससे बोल रहे हो, लेकिन छोटे जो उसमें होता है टैवर्न्स में, इट्स लाइक द बारटेंडर इज आल्सो द, या इज इट समबडी एल्स? हाँ, या द बारटेंडर्स आर आल्सो द ओनर्स ऑफ द बार ना, जैसे तुम्हारे सिम्पसन में, इफ यू हैव वॉच दैट कार्टून सीरीज, ठीक है, और मो बार में वही बारटेंडर है, वही ओनर है, ठीक है, स्मॉलर बार. ठीक है, तो ही इज द डिस्टिल, जो भी है तुम्हारा बनाने वाला भी वही है, देने वाला भी वही है, ठीक है. Distiller, I don't know what to call that, but the one who actually puts alcohol together. So in a way, he is the owner, he is the bartender, everything. So, also wir haben hier neue Charaktere, Glob. Wer noch? You have Bulltrotter, you have written it here. Der Keller, der denselben Namen hat, ठीक है, मंका ही उसका नाम है, और वो दिखता एक्चुअली कैरेक्टर वही है, द सेम कैरेक्टर प्लेज बोथ केलनर, ठीक है. इट्स रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले दैट बोथ केलनर, who are supposedly brothers and look the same and have the same name, are to be played by the same person also, but they are two different people, ठीक है. And then we have another prostitute here, Augusta, and one more person, ठीक है. You have Globe, Bulltrotter, the person who again either he sells newspapers, he writes in newspapers, and you have Augusta, the prostitute, Kellner with him, again Manka, and Lar है उसका नाम, the third person who only in the end he speaks up. These 5 people are sitting in this bar, and what is happening here? Ihr habt sicherlich also diese Zusammenfassung gelesen. Wollt ihr hier was hinzufügen? हाँ, he is basically it belongs to him, everything, ठीक है. See, it's like partially, it's like a small bourgeois. Maybe we have not studied. It's like petty bourgeois and the big bourgeois. ठीक है. Upper middle class is different, and then petty bourgeois is something else, which sided with the Arbeiter class in this time. ठीक है. Because he is, after all, a revolutionary. Na here. You are right, Matthew. That is what you want to point out. Okay. So what is happening here? What happens in this act?
हाँ, before Kragler arrives somebody else also arrives ना. आना एंड बाबूश पूछते हुए जाते हैं कि यहाँ पे कोई आर्टिलरी यूनिफॉर्म में कोई आया था, तो उन्होंने कहा क्यों किसी को आना है एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दे जस्ट कंफर्म एंड दे गो अवे बिकॉज ही इज नॉट देयर एंड देन एंटर्स अपना क्रागलर एंड ऑब्वियसली इट ही एंटर्स लाइक दिस ना कि ये वो बस दिस अ विंड, लोग पूछ रहे कि ये हवा कहाँ से आई, एंड ही एंटर्स इन दैट हिज ओन ड्रामेटिक वे. ठीक है, ओके. एंड व्हाट हैपेंस देन? हाँ, ठीक है. तो यहाँ पर थोड़ा सा वही मेलोड्रामा की अरेस्ट की क्या कहानी है, ये वो एटसेट्रा. तो वो अपनी कहानी बताता है, अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है उनको, ये सब वो सब. ऑब्वियसली यहाँ पे भार हो रहे हैं, रेवोल्यूशन उसकी भी बात हो रही है. ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस देन? मारी एक्चुअली इसकी आज की दुख भरी कहानी बताती है, फिर अगुस्तस से पूछते हैं कि आप अफ्रीका के बारे में कुछ बताओ, तो वो बताता है. ठीक है. एंड देन व्हाट मतलब बेसिकली व्हाट इज द जिस्ट ऑफ द, मतलब हाउ डज द स्टोरी प्रोग्रेस इन दिस एक्ट? हाँ, सो दैट इज द क्रक्स. ठीक है, इन द सेंस कि नॉट ओनली डज ही जॉइन टू मतलब डिसाइड टू जॉइन द रेवोल्यूशन, बट ऑल्सो इन अ वे ही ऑल्सो इंस्पायर्स अदर पीपल कि लेट अस फाइनली गो एंड जॉइन दैट. बीच बीच में काफी चीजें आ रही है. वो सॉन्ग जो हिमांशु ने लिखा है, व्हाट डज दैट मीन? Whether Himanshu's interpretation is correct or do you want to add something else to that? हाँ, बट ओके, थ्रू आउट वो अपनी कहानी बताता है एंड इट्स लाइक ड्रिंकिंग एंड ट्राई टू एक तरीके से कोप विद दिस पेन, हाँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम वी आल्सो गेट टू नो अ बिट अबाउट ग्लुब्स कहानी, कि उसके साथ भी इनजस्टिस हुआ है. हाँ, जो भी मतलब उसका चीज, मतलब इसमें तो यहाँ पे तो खैर this is another thing, hat sie einer gestohlen, wir haben sie das Fahrrad gestohlen. ठीक है, this has a role to play in itself. एंड उसकी स्नैप्स को फेंक दिया गया था, उसका जो भी हुआ है, बट ही इज आल्सो नॉट रियली हैप्पी विद द करंट सिचुएशन, ही वांट्स टू फाइट बैक. एंड लार ऑब्वियसली ऑल्दो क्लियरली ही जो डिडंट से. ये मेंशन होता है, हाँ बोलो मैम, जो ऊपर ये ग्लोब का मेंशन होता है कि उसकी मतलब उसकी बाइसाइकिल या व्हीकल चोरी हो जाता है या कुछ, तो ये रिजेम्बलेंस इससे दे रहा है क्या कि जैसे अना बालिका किसी और के साथ हो जाती है, तो हाँ. एक बीच में कैरेक्टर जैसे पूछ रहे होते हैं ना कि क्या हो गया तुम्हारे साथ, तो वो बोलता है ना कि वो किसी और के साथ, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइक दिस ओनली इज लाइक, मतलब दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन है या वो सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है कि मेरी बाइक या हाँ, बाइसाइकिल चोरी हो कनेक्शन गई है थी? ना, जैसे ऊपर भी बात हुई थी कि er hat alles verloren, er muss sein Weib wieder haben. So what are these sentences? We'll come to that when we talk about ki what is really being talked about in this story. Is it really about the क्योंकि love triangle or इनको is it पढ़ about के something एक आइडिया मिला था कि हाउ द प्ले इज लाइक अ कॉमेडी प्ले. else? हाँ, but what is the comedy pointing to? Because it's not senseless comedy, na? It's after all trying to say something, है ना? Ma'am, like हाँ बोलो. once he is like kind of like artillery thinking that yes, we should be like engaged in wars and everything, and just like starting of the fifth act, he just like refuses everything and he leaves the bar. So this shows the hypocrisy of Kragler, especially Kragler, who is more indulged in the war and who has also gained experience in the war, but later on he refuses and he just part his ways towards the war and just like wants to be with Anna from We can like. talk. We'll talk about that, but let's do that after we have discussed the fifth act. Okay, so you are right. कि perhaps he's not that sad hero that we take him to be. It becomes actually pretty apparent in the fifth act. Fifth act अचानक से ही एक तरीके से पलटी मार रही है, and you can see the what is happening, how are things coming back together, how is Anna and your Kragler are even getting back together. It's in itself is I mean deliberately chosen way. No? It's not a very melodramatic thing that is happening there. You are correct. हाँ, but we'll come to that later. अभी हम fourth act को complete कर लेते हैं, then we'll go to the fifth act. So yes, there might be some connection here, but let's move on. कि यहाँ पर मेन बात यह है कि we get to know कि Globe is also dissatisfied, Bull Trotter is also dissatisfied, but they are like more or less
not really getting into the revolution. For them, they are still distanced from all that revolution that is happening outside. Only Augusta is the one who is like in between, says कि तुम लोग वो हो, डरपोक हो और कुछ नहीं करते हो, ये सब वो सब, and you should fight back, etc. ठीक है, but none of the other people is मतलब they are dissatisfied but not really, perhaps not so, या मतलब उनकी मेन थिंकिंग तो ये है ना कि इट्स जस्ट अ क्लाइनस unrecht, बीच में ये बार बार रिपीट हो रही है ना बात, जस्ट अ क्लाइनस unrecht, मूव ऑन टाइप्स थिंकिंग कि स्नाप्स पियो और भूल जाओ, स्नाप्स पियो और भूल जाओ, ठीक है. And that is what they are doing. They are dancing around and trying to forget, trying to escape their pain. That is what this act is about. But you are right कि it is then Augusta तो कह ही रही है बीच बीच में. But and later on he does say, एक सेकेंड, हाँ लार भी अपनी कहानी बताता है. इज अ आई थिंक अ फार्मर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ऑल्दो क्लियरली यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट उसके साथ भी कुछ हुआ ही है. दे आर ऑल लाइक सैड एंड सैड पीपल जिनके साथ कुछ ना कुछ इनजस्टिस हुआ. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दैट. स्टेला, इफ यू कैन फाइंड इट लेट मी नो, जहाँ पे वो बोलता है. noted it down. Ma'am, as I have not mentioned in this act, because I think I should ask you once again, like the act is itself stating the dawn is turning red in English translation. So ma'am, it's like the red symbolizes the scene of the revolution over there. एक सेकेंड, कहाँ पर? कैन यू टेल मी द पेज नंबर? Ma'am, Act 4, the heading in the English one, it's 80, page number 85. The Act 4 heading in the English one, the dawn is turning red. It's like the revolution is about to begin or like happen. You're right. Red is obviously in connection with the like color of revolution where like bloodshed happens, or not only with bloodshed, but red is very clearly your left there, like na? We are communists, ठीक है, the red. रेड आर्मी. हाँ ठीक है, यहाँ पर यू हैव बीच में आ भी रहा ना कि बीच में न्यूज पे बेसिकली इट स्टार्ट्स विद व्हेन दैट Zeitungsfrau comes in and talks about क्या कहते हैं that die rote Rosa spricht. I told you about that तुम्हारा Rosa Luxemburg, if you remember initially, and actually even that is missing in the protocol. We talked about किस तरीके से Liebknecht and Rosa Luxemburg were leading this revolution, and how they were caught and killed in the end, and how this revolution failed एक तरीके से. तो ये जो तुम्हारी Zeitungsfrau बीच में आती है, she talks about ये सब चीजें, इनका फिर जज्बा बढ़ता चला जाता है. Just trying to find that. etc etc. ये ठीक है, if you find it you let me know. But anyway, जहां पर तुम्हारा ये it's a very bad copy. हाँ यहाँ पे the reason you couldn't find it is because it's such a bad copy. यहाँ पे die rote Rosa spricht unter freiem Himmel im Tierpark, ठीक है, but in the English version perhaps it's not written rote Rosa, it's written something else. हाँ, तो यहाँ पर you have this कि they're instigating the revolution ना, so she's speaking there, and they are like getting in the mood धीरे धीरे, and he is also dancing about and saying कि stay fest, see Luft tief, ये तो खुद बोल रहा है, मतलब कर रहा है, steht fest, see tief Luft ein, Schluss machen ist besser als Schnaps, es ist kein Spaß, verschwinden ist besser als schläfern. So he's like getting in that mood कि कुछ करना ही बेटर है, हम कर गुजरेंगे, हाँ कहानी को खत्म करना बेटर है als Schnaps, यानी als simply flee करना, escape करना situation को, and basically he in a way starts मतलब pushes them towards going, and then everybody is like हाँ let's go. Let me see कि इसमें कहाँ रखा. Ma'am, but to be very honest, like going on this like German just German interpretation is like pretty difficult, as there are no sources regarding this text available on the.
कोई बात नहीं, तो जितना भी हम देखो, ऐसा है कि जो मैंने शेयर किया था इंग्लिश वाला वर्जन, उसमें एक्चुअली यू कैन, if you have read what Brecht himself has written, there is a foreword of 4 pages there, when he very clarifies why he actually wrote this. So from there you can actually get a bit, but I understand कि हाँ इसमें कोई वो नहीं है. Can you see the screen now? Yes, ma'am. ठीक है, तो एक बार just मैम एक्चुअली ये आप पूछ रहे थे ना कि ट्यूसडे को ही सबमिट क्यों नहीं करा, बिकॉज मैम लाइक आई वाज नॉट able to follow up the flow of the play, like what's happening in the first and what's happening in the third. When I got that file on the Google Classroom, like the English version, then I started reading from once again, like from the first act. Then I got to know that what's happening and how things are connecting each other. that is all fine. All I'm saying is कि जब भी ऐसा कुछ हो, this is for everybody, then the first thing that you do is contact me. ठीक है, Okay, ma'am. कि हम नहीं आ रहा समझ में, हमें क्या करना है, ये तो इन हार्ट नहीं समझ, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, यू talk to me. Otherwise my impression would be that you're not doing it the work, या perhaps you started doing it जब मैंने कल नोटिस किया कि किसी ने कुछ अपलोड ही नहीं किया, and then you perhaps started doing it, है ना? That would be my impression if you don't communicate your problems to me. But ठीक है, coming back to this, हाँ ठीक है, तो दिस इज द, मतलब दिस इज द वर्जन जिसको जब भी हम डाउनलोड करते हैं हमेशा, बिकॉज ये इमेज से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, आई थिंक किसी को अगर आता है करना तो प्लीज डू इट. बट यहाँ पे है स्पार्टाकुस इन den Zeitungen. ठीक है, साइटुंग्सफ्राउ बोल रही है, im Hintergrund Zeitungen, Spartacus in den Zeitungen. Spartacus हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्चुअली इवन दैट इज मिसिंग इन योर प्रोटोकॉल. Okay, die rote Rosa spricht unter freiem Himmel im Tierpark, Belagerungszustand, Revolution, Bulltrotter, her die Zeitung, das ist für uns. Zeitungsfrau Grell, die Pöbelkrawalle, wo ist das Militär? Nur 20 Spanisch. Wo ist das Militär? Hier, Herr Artillerist. 5 Test schon wieder. Duckt sich, ist es Spaß? Auf die Barrikaden mit dem Gespenst. Steht fest, zieht tief Luft ein. Schluss machen ist besser als Schnaps. Es ist kein Spaß. Verschwinden ist besser als, मतलब यहाँ पे it's like, although all of them are drunk, ठीक है, तो it's like it's too much, let's go, let's join the revolution वाली जो चीज़ है. तो Bulltrotter springt auf den Tisch. Ich bin am Skagerrak gewesen, das war auch kein Frühlingsfest. Club schließt den Gläser, अब ये is also just क्या बोलते हैं, बंद कर रहा है अपने बार को. Wischt sich die Hände ab. Manka, gehen wir, Augusta, mit dem Schild oder auf den Schild. You understand this, no? Mit dem Schild is like protesting, and oder auf dem Schild is when you are dead. ठीक है, Bulltrotter. Und was ist mit deiner Destiller, Schnapshändler? Die bewohnen die Ratten, you understand all that. Jetzt pfeift es wieder, meine Lieben, oben in der Früh oder wie ersäufte Katzen auf dem Asphalt. Oben in der Früh, you understand this, no? So he is now kind of leading them to the revolution. कि या तो हम क्या कहते हैं, मतलब सुबह तक मतलब थोड़ा सा मार्टर वाली मौत मरेंगे, नहीं तो वी आर गोइंग टू सिंपली डाई, जैसे कि हम जिस टाइप की हम लाइफ जी रहे हैं, लाइक एर्जॉइफ्टर कट्स. तो आर वी गोइंग टू डाई एन ऑप्रेस्ड पीपल की डेथ, या आर वी गोइंग टू डाई हीरोज? तो सब कह रहे हैं यस, डाइंग हीरो इज बेटर देन डाइंग एन ऑप्रेस्ड वाला डेथ. ठीक है, तो यहाँ पे वो बेसिकली टेकिंग देम टू द रेवल. तो दैट इज द थिंग. क्लियर? Yes, ma'am. अब coming back to what has written, for example, about the बीच में जो ये song आता है, just to clarify whatever the problems might be. ठीक है, एक तो we get to know that he actually did desert. वो जो भाग कर आया, वो भाग कर आया है. And 3 times he Crackler tried to desert the army. लेकिन थर्ड टाइम ही वो सक्सेसफुल हो पाए, दैट इज हाउ ही इज हियर, बाय डिजर्टिंग द आर्मी. And then you say कि will nur mit Anna zusammen sein, that das passiert eher in der nächsten Akt. हाँ, जो तुम कह रहे हो ये सॉन्ग से रिलेटेड. अब die anderen Hunde kamen angerannt, diesen Hund ein Grab zu schaufeln, whatever, all that Hund वाला जो टाइल था, ठीक है, जिसमें he's like कि जो dog came to eat an egg, and जो कॉक था हुई ही ये brach den Hund entzwei. हाँ, you read that ना part. So how is that to be understood? Is it to be understood as disillusion from the Krieg, or is it about something else? हाँ बोलो.
Ma'am, actually, I thought it's disillusioned. I didn't thought anything else. What do other people think? Perhaps if we see it in the English version, which is, I mean, more clearly and fully visible, that song. How do you take that part to be? क्योंकि जर्मन वाले में तो दो दो लाइंस हेयर एंड देयर आ रही हैं, बट दिस इज द सॉन्ग. एक तो ये है, ये तो आई अंडरस्टैंड. The drunk man who was perhaps earlier a revolutionary. My brothers are all dead, and I was nearly so. November I was red, but January no. That means कि because of the danger, I just abandoned the red is like the revolution here. ठीक है, just a communist revolution. But Ma'am, what मेरी about चीज this? पूछना था। हाँ बोलो. Ma'am, as like mentioned, जो title है Trommel in their Nacht. Trommel as in means drums. तो थर्ड और फोर्थ एक्ट में शायद इंग्लिश वर्जन में शायद एक जगह मेंशन हो रखा है, वरना मैंने और जो रेफरेंसेस ली उनमें ड्रम्स का जिक्र काफी जगह हो रखा था थर्ड और फोर्थ एक्ट में ना. कि मैंने ये पढ़ा था कि कॉमिक मेरे को ऐसे लगा कि पहले ये जो ड्रम्स होते हैं ना, ये इनके बूर्जुआ क्लास में होते हैं, और ये रेवोल्यूशन जब जहाँ न्यूज़पेपर के फाइट शुरू हो जाती है ना, वहां से ये ड्रम्स उठा के ले आते हैं क्रैगलर जहाँ पे एंटर होता है. तो इनके पास ना वो ड्रम्स है, और वो इवेंट वैसा मतलब ना काइंड ऑफ हम बोलते हैं कि फील बन जाती है. तो बेसिकली ड्रम्स को यूज थर्ड और फोर्थ एक्ट में करा है, बट जो जर्मन वाला है उसमें तो बिल्कुल नहीं दिख रहा. इंग्लिश में एक जगह दिखा है मेरे को, बस एक जगह, बस ट्रॉमल वर्ड. और जो और रेफरेंसेस है उसमें फिर भी थोड़ा बोला है कि थर्ड और फोर्थ एक्ट में ऐसे ड्रम्स को सिचुएट कर रखा है. क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ट्रॉमल है तो, बट उसका यूज क्यों नहीं हो रहा कहीं पे भी. नहीं देखो, ऐसा जर्मन वर्जन जो मैंने शेयर किया दैट इज एनी केस थोड़ी सी डैमेज्ड है वो. तो अभी जो दीप्ति ने शेयर किया लिंक, उसको एक बार पढ़ो. तो ये जो पीछे थ्रॉमल की आवाज, ये जो भी है कहीं ना कहीं आ रहा है. ऐसा नहीं कि एब्सोल्युटली एब्सेंट, ऐसा नहीं है. ठीक है. बट ये मतलब दिस थिंग आई एम अ बिट क्यूरियस अबाउट. परहैप्स यू कैन शेयर दैट थिंग विद मी कि जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि थ्रॉमल ये ड्रम्स जो हैं बूर्जुआ के हैं, एंड ही ब्रिंग्स दैट, या डू यू मीन आर्मी के हैं और दे आर टेकिंग इट ओवर? मतलब I don't know what you mean by that. Just share that with me so I can have a look. ठीक है. But here when you क्या कहते हैं, talk about this. A dog went to the kitchen to get a bone to chew. To cook, the cook picked up his chopper and cut that dog in two. So you just say, for example, interpret it as the bone as your idealistic dream. But how do other people see it? A dog that went to the kitchen to chew a bone. Is a bone an idealistic dream, or is it something else? Perhaps you are confusing that with the other song that जो Zoldaten वाला था, ठीक है, which Brecht मतलब inserted in his Stuck later on, ठीक है, where the dead soldier was dug up from his grave, हाँ, and made to still fight the war. कि no, ये तो ऐसा कुछ problem नहीं है, you can still fight the war. ठीक है, that speaks against the war, but यहाँ पर is talking about the injustice happening to the proletariat class. The dog is that मतलब वो section which lives on very few things, and to chew a bone is not an idealistic dream, it is a necessity. ठीक है, it is something that you need to survive, and only this much, or in German version it's I. ठीक है, हाँ. The cook is that bourgeois class which owns the whole thing, and he doesn't let the dog even have that much. It's a reason na, कि there is it's not like a dog came in and took over whole supper or something. Okay, he just wanted a bit, and even that was denied by the cook, and the cook cut the dog into two. Okay, so it's about this injustice that is being done. हाँ बोलो. How about interpretation of the above, like just the above one?
हाँ, that is a Which is different way. okay. तो यहाँ पर दोनों चीजें एक तरीके से कॉन्फ्लेट की जा रही हैं. सेकंड सुजाम टेलिंग एक, and I mean that is what we will discuss later on कि what is it that is being talked about here. ठीक है कि एक तो people are hesitating to even fight in the revolution. दूसरा people are understanding the injustices that is happening because यहाँ पर क्या हो रहा है, they are dancing with each other and you can see कि Augusta is the only person who's clear about her stand that we should fight the revolution with the revolution, है ना, we should be there with them. She is clear about it. All the others are either at the moment given up or afraid because that is what his the drunken man's thing is about na कि नहीं भाई I am not going to fight in it anymore. And she is the one who is very clearly कि no, why are you so coward, all of you, this and that. ठीक है. So you have this मतलब be a bit careful about this. And if you have a source, then please share that with all of us, not only with me. You can just share it on our Google Classroom so everybody can have a look at that. Okay. So this is about the fourth act, that he leads them to the revolution. He gets infected by the spirit, revolutionary spirit, and lead them to the revolution. Now, also jetzt kommen wir zum fünften Akt. Was passiert in diesem Akt? You have also read. Oops. Other people's, I think even fifth act, गौतम ने लिखा है तो, and Sumit ने लिखा था जो यहाँ पे नहीं है. But Sumit, I think you have written more about the conflicts anyway. Gautam is the one who has written the Suzaman Pasu. So, what do you have to add to that? Is there any, what happens in the fifth act, just to recapitulate? Ma'am, as Ranjan mentioned in this act, like what I got to know, and I think like it's one of the major point in this act. Like in one, there's a like sentence like the moon is big, round and red. It's like kind of the moon is big. What I thought about is like kind of the revolution is like about to happen, and it's like ना मतलब n number of people उसके अंदर engaged है. और राउंड एंड रेड बिकॉज थोड़ा ज्योमेट्रिकल जो फिगर जो मैंने और रेफरेंसेस लिए थे उसमें कुछ ऐसा ही था कि जो पिकाडली बार है इसकी जो इसका ज्योमेट्रिकल स्टेटस है वो थोड़ा राउंड जगह पे जाके है. तो और जो रेड है वो ऑब्वियसली पिछले वाले एक्ट में हम कर चुके हैं कि वो रेवोल्यूशन का एक सिंबल है. तो इस लाइन के ऊपर मतलब जैसे एग्जाम पर्पस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसके ऊपर मतलब मेरे को ये समझ आया. आई डोंट नो apart from that. Exam point of view मतलब मैम मतलब लाइक अगर मैं अपनी ग्रेजुएशन के बेसिस पे पॉइंट करूं, जैसे कुछ स्टोरीज या कुछ भी ऐसे ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाता था कि जो हम सिमिली या मेटाफर की तरह कंसिडर करके कि इस पॉइंट को क्या मतलब क्या ये कैरेक्टराइज क्या करता है या ये टर्म या ये लाइन क्या मतलब है इस एक्ट में, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है. अच्छा, उस चीज पे भी हम आएंगे बिकॉज अभी हम इनहर्ल खत्म कर रहे हैं कि व्हाट आर द सिंबल्स, व्हाट आर द मोटिव्स प्रेजेंट हियर. बट ठीक है, दिस रेड मून इज रेड एंड राउंड. हाँ, तो व्हाट डज इट सिंबलाइजिंग एंड व्हाई इज इट बीइंग, फॉर व्हाट पर्पस इज इट बीइंग यूज्ड. ठीक है, तो ये एक पॉइंट है जो तुमने मेक किया है. प्लीज शेयर द सोर्स एंड व्हाट, व्हाई डू यू थिंक कि पिकाडेली वो उसका ज्योमेट्रिकल वो राउंड है, तो इसका राउंड होने से मतलब इसमें कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है या इज इट समथिंग एल्स दैट इज मतलब इफेक्टिव क्या होगा, इसको कैसे देखा जाएगा. एंड यू कैन आल्सो बाय द आवर नेक्स्ट क्लास आल्सो रीड व्हाट ब्रेस्ट हैज रिटन ऑन दिस. आई थिंक वी कैन डिस्कस दैट. आज जितना डिस्कस होता है वो भी ठीक है, बट अगली बार के लिए वी कैन हैव दैट. बट ठीक है, थैंक्स. एक तो ये पॉइंट हो गया. लेकिन कमिंग बैक टू द इनहाल्ट इन इटसेल्फ, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज दिस एक्ट डूइंग. एंड रंजन ने तो नहीं मेंशन किया है, परहैप्स यू टॉक टू हिम personally, but Gautam ने लिखा है. Is anybody in contact with Ranjan? No ma'am, I thought that Ranjan has written it. Sorry. अच्छा It's Gautam. हाँ हाँ.
ठीक है. And is anybody by the way in contact with Karthik? ऐसे ही generally याद आ गया मुझे. Ma'am, I think he has left his admission, or like I think Suraj has told me about him that he is अच्छा अच्छा. no more in this course with our classmates. Is there any reason behind it? नो मैम, अभी कंफर्म नहीं है, मैं इसे पता कर लेता हूँ. नहीं, ठीक है, अब तो मैं ही पता कर लूंगी मनीषा मैम से बात करके. ठीक है, डू लेट मी नो. लेकिन बिकॉज आई वाज आस्किंग, आई थिंक इट वाज हिज एडमिशन ना, जो कि आई थिंक दूसरी यूनिवर्सिटी से भी हमको मेल आई थी कि ही इज आल्सो एडमिटेड हियर, एंड इज ही आल्सो देयर इन दिस यूनिवर्सिटी. सो perhaps it has something to do with this double admission thing. I hope nobody and no one else is double admitted. ठीक है, दो simultaneously दो यूनिवर्सिटीज में admitted नहीं है, because as of now it is not allowed. Okay. Ma'am, what about if one is enrolled in an open university and a regular one? नहीं, I think open university में कर सकते हो, but एक बार please do check it. Which I think it's regular, two regular courses are not allowed simultaneously. But still check it. ठीक है कि open university और ये दोनों भी allowed है कि नहीं. ठीक है, एक बार मैं भी yes ma'am. confirm करूँ. Is it ये allowed? हाँ हाँ हाँ, ठीक. दो रेगुलर कोर्सेज एक साथ नहीं कर सकते, बट ओपन और रेगुलर चल सकता है. हाँ, ठीक है. बट इट देयर इज नो हार्म इन आस्किंग. कहीं ऐसा ना हो ना कि बाद में जाके प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि एक लड़की के साथ हुआ था पहले भी कि शी डिड बोथ. एक्चुअली आपसे ये पूछना था कि एक ओपन और रेगुलर, मैम क्योंकि मैंने यूजीसी की गाइडलाइंस में कभी पढ़ा नहीं है कि कहीं ना ऐसे मेमोरेंडम नहीं है प्रिंटेड कि आप कर ही सकते हो. इट्स लाइक मैंने बहुत लोगों से पूछा था, वो लोग कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है और तुम करना चाहते हो तो कर लो, ऐसे खुलती बुलती नहीं है, पर कभी कुछ खुल बुल गया तो तुम देख लेना. हाँ, तो वही बात कह रही हूँ ना मैं कि इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी कि कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. बट आई जस्ट कंफर्म वंस, इवन आई डोंट नो. आई थिंक दीप्ति इज राइट हियर कि एक रेगुलर और एक ओपन इन द सेंस कि तुम कॉरेस्पॉन्डेंस है जो भी जैसे इग्नू वगैरह होती है वहां से कर रहे हो, वो सब अलाउड है. हाँ, या मैम दूसरी मेरे ख्याल यूनिवर्सिटी से वो भी वगैरह अलाउड नहीं है कि एक रेगुलर और एमए के एक लेवल ओपन पे. सेम इट लेवल इज सेम. पॉसिबल. हाँ, इट इज पॉसिबल एक्चुअली, क्योंकि इवन इग्नू में ही अलाउड नहीं है कि तुम दो एमए कर सको. हाँ, जहाँ तक मुझे पता है, आई थिंक यू कैन डू, जैसे तुम कह रहे हो सेम कोर्स में मे बी इट इज नॉट येट अलाउड. पीपल वर टॉकिंग अबाउट इट कि गवर्नमेंट इज येट टू मेक दोस चेंजेस कि अलाउ कर दो, बट अभी अलाउड नहीं. बट आई चेक. ठीक है, तो तुम खुद भी चेक कर लेना कि कोई ऐसी इशू क्रिएट ना हो जाए लेटर ऑन के लिए, बिकॉज जैसे कि अभी हुआ है, यू थिंक कि हाँ फाइल खुलेगी नहीं खुलेगी, बट जर्मन स्टडीज एंड बाकी इसमें इट्स लाइक अ वेरी स्मॉल फील्ड, वी नो ईच अदर. ठीक है, तो पीपल डू टेंड टू आस्क कि तुम्हारे यहाँ पे है, हमारे यहाँ पे है. ठीक है. ओके, so just wanted to clarify that. Okay, coming back to our act film. तो what is happening here? यहाँ पे ऊपर वो रेवोल्यूशन के लिए तो चल पड़ा, यहाँ पे आना भी ढूंढने चल पड़ी. ठीक है, तो अब वो दोनों टकरा रहे हैं यहाँ पे एक्ट फिल्म में. एंड what happens? तो मतलब I think Gautam has actually summarized it pretty well. But is there anything that you want to add to that, to what he has written? हाँ बोलो. नहीं नहीं, द अंडरग्राउंड इज द अंडरग्राउंड मिड, तुम्हारा ये उल्टा बान. तो शी इज नॉट प्लानिंग टू कमिट सुसाइड. हाँ, द अंडरग्राउंड इज दैट शी वांट्स टू गो होम. ठीक है, नॉट कमिट सुसाइड. बट यस, इन बिटवीन आई थिंक यू हैव मेंशनड इट. कैन यू म्यूट योर, हाँ ठीक है. क्या कहते हैं, आई थिंक यू हैव मेंशनड इट, लेट मी चेक अगेन दैट the others try to push her, या Augusta या कोई और, just kill her because this is the reason why Kragler is not coming to the revolution. ठीक है, so that is happening, but she is not the one who is planning to kill herself. Okay. Bama, I want to ask, like there are two lines on presented on like page number 89. The saintly Slattern disappears, swimming with him through floods of tears. What does it mean here? एक second, are you talking about this English version? Yes ma'am, English version. कहाँ पर है, एक second, let me see. Page number 89. ये तो act 4 ही है. Last page of this act. No ma'am, sorry. It's present in act 4, last page of act 4, starting of the act 5th, before that.
Let's see the variations. यहाँ पे लिखा है ना 54. Swimming with him through floods of tears. What is Slattern? I think it might have something to do with the जब वो originally कह रहा था ना कि वो is this an evangelium, is he going to speak something holy, ठीक है, तो that thing has disappeared, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा floods of tears यानी कि जो misery ऊपर आ गई है, as far as I understand, जो misery तुम्हारी ऊपर आ गई है of the real world, so that saintly जो do you remember in German it is written कि are you going to tell us a story or is he going to tell us an evangelium? Do you remember that, Stella? It's like you are going to preach us something. So that thing is not is gone and is I mean Slattern तो actually इसमें कुछ और लिखा हुआ है, it's like Schlamper, ठीक है, and through and okay, ठीक है, the saintly Saturn disappears swimming with him through floods of tears. Okay, that is actually referring to Marie herself, ठीक है, like Slattern is your Schlamper, ठीक है, it's like reminding of that जो जीसस के साथ जो Schlamper थी, ठीक है, अब वो हमारा साथ देने चल पड़ी है, ठीक है, we are also going to, so you get that point, but let us see ki what is written in the No, ma'am. 54. Are these two lines supposed to be for Mere only? Before? Are these two lines supposed to be for Mary only? I mean, at the moment, yes, because that is what his, that is how I see it. Yeah, what do you think? किसकी हो सकती है? Because according to me, he's like now they are now together going to the revolution, na? And with them the two women that are there are actually Schlamper, and that it's like almost reminds them of a क्या बोलते हैं तुम्हारी ये होली जर्नी जो कि उसमें भी तो it was मारिया ही था उसका नाम. Yeah, what was that? What was the name? Who was with Jesus Christ? Yeah, am I mistaken? Does anybody know? Do you know the story ना कि जीसस के साथ जो थी वो मतलब भाई she was also a whorer, है ना? And I think it was also Maria. So I think it refers to that in that sense. But let me see if they have written something else. It was 54 ना जो लिखा था. अच्छा, this is the in German. This is the translation of the German version. Okay, that was a different book. तो it has that reference to मेरे हिसाब से Christian वो जहाँ पे they were also in a way revolting against the Roman pagan वो ना जो वहाँ पे चल रहा था, if you remember that story, and I think that was also Maria and that she was also a whorer. Can somebody check it out and let me know if somebody already knows something about it? Yes, ma'am. It's Mary. हाँ, ठीक है. Okay, so I think it is meant for his companion here. Yeah, what do you think? The person who pointed out, Gautam, तुमने ही बोला था ना? ठीक है. So moving on, if there is nothing further to say, I mean, I only have this much to say. I'm just being honest about it. I don't have very much idea कि इसका क्या मतलब हो सकता है. ठीक है? मतलब I see it like this. This is how I see it. हाँ बोलो. In terms of Japanese, like specific about their language and their like region or their religion, Slatin usually means regarding time.
Like Uh, the polarity between the clock time and the experience time. Latin. According to, yes, ma'am. हाँ, but According do to we them. want to but do we want to go that way? Because यहाँ पर एक एक्चुअली सेकंड आप हाँ पूछ रहे थे ना कि इसका मतलब और हम्म, क्या, तो मैं वो बता रहा हूँ कि मेरे को एक जगह ये बहुत मुश्किल से ढूंढ के ये मिला था, बट मुझे पता नहीं कि इसको मैं कैसे कॉन्टेक्स्ट के साथ मतलब जोड़ूं या किस फ्लो में हाँ तो इसको। इसी पॉइंट ऑफ से आई थिंक टू सी इट एज श्लम्प बिकॉज आई सी दैट ट्रांसलेशन स्लैटन मीन्स श्लम्प विच मीन्स होर ठीक है होर ठीक है द सेंटली होर एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ मारिया कृष्ण उसमें ठीक है and because in original German also he is actually evoking the same metaphors now जैसे earlier also he's talking about evangelium and here is he's also talking about saintly हाँ और in German version is also talking about क्या कहते हैं purge me of sins वाला sense में white माखन जो भी करना है तुमको ठीक है तो वो एक तरीके से अपनी होली जर्नी पे चल पड़ा है in fighting this revolution ठीक है so it's like it can be seen as partially in that वो idealistic sense ना कि and he's a drunk man you have we can come back to this thing later on ठीक है if not today in our next class that would be the final class where we can discuss all the things that we have left out अभी तक the interpretation of these things why is it a drunk man hmm? what does this mean why do we have these people so I think that Shlampa one makes more sense here according to me ठीक है okay so coming back to the act itself तो हमारी वहां पे क्या बात हो रही थी दैट वो दोनों टकरा जाते हैं और फिर अना ट्राइज टू कन्विंस हिम एंड एट सम पॉइंट लाइक Kragler decides and like was frustrated over the like by the reality that how she is pregnant, and for a movement he changes his mind to like let go of all those things, and now he decides to just be with Anna. That's all I have understood in the Act 5. हाँ so overall तो ये है correct हाँ correct in the sense that suddenly Anna appears and she declares that she wants to be with him but at the same time she tells him that she's pregnant and he becomes hurt Gautam hat das gut zusammen gefasst ठीक है but he And does हाँ बोलो everyone, the people who were accompanying them, like Gloob and the Augusta, they got surprised and shocked that how can like someone changes so instantly, or like how someone can change his decision so instantly that मतलब कुछ ही देर पहले तो वो बोल रहा था कि रेवोल्यूशन या वॉर पे चलते हैं, बट अभी एकदम से वो so this also like a glimpse of this thing also takes place in this act as well. हाँ I mean pretty much it is actually focused on in this particular act no finally I think it's the first time then that you don't I mean I'll ask other people how do you see Kragler now after this act it's like okay the other people who are with him they clearly call him out as he abandons and betrayed them है ना and that he now wants now that he has his woman back he just wants to go back to his normal way of life या जो भी है and etc all those allegations that they put him and what how does he respond to it what does he say okay or in other words what does this make this act makes you think of what is happening according to you do you see it as a happy ending to the play or how do you see it as was glaubt ihr was hat Krag schätzt ihr seine Tat hier am Ende
See, this is the Untergrundbahn, ना? वो is the Untergrundbahn here. The person who was asking that. ठीक है, तो Augusta कह रही है कि there is not going to be any ban. So that is the underground. Okay. Was ist mit der Antwort der Frage? How is the, मतलब, how do you take this ending as? That he suddenly decides to be, first he's like feels betrayed, that and also एक तरीके से verbally abuses her, and acts, I mean, you understand ना कि it's supposed to be childish, this way of acting, कि वो मिट्टी उठा उठा के फेंक रहा है हर जगह, and आना कह रही है हाँ हाँ मुझे मार दो, और दूसरे लोग कह रहे हैं ये तो उसको मार ही देगा. How do you see this scene as, if you remember that scene? Are you there, Loiter? Yes, ma'am. The other people? Yes, ma'am. हाँ तो बोलो भी तो सही कुछ. ये Verfremdung इफेक्ट की स्ट्रेटजी है. नहीं, Verfremdung effect, first of all, forget that Verfremdung effect. What effect does it have on you? If you imagine this happening, ठीक है, earlier, मतलब what I'm asking you is कि चलो in heart तो clear हो गया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये सब हो रहा है, but जब जिस तरीके से इसको portray किया जा रहा है, ठीक है, कि when he gets to know कि oh, while I was lying on that field, जो भी है, ठीक है, where were you lying, ठीक है, such things. And of course when he वो मिट्टी उठा उठा के फेंक रहा है, because it's not Steiner ना that जो कि वो फेंक रहा है उठा के, हाँ, तो you imagine that scene कि क्या कहते हैं, he's feeling so hurt that वो clumps of clay उछाल रहा है जमीन से और फेंक रहा है अपने आसपास, एंड अब दूसरे लोग कह रहे हैं अरे इसको बचाओ ये तो मार ही. Yeah, when you were reading it, what were you feeling? Was it supposed to be melodramatic? Was it supposed to be funny? Hello? Was somebody beginning to say something? मैम ये तो मतलब वही है, बहुत ज्यादा चाइल्ड लाइक बिहेवियर कर रहा हाँ. था क्राकलर, बहुत ज्यादा. मतलब उसे गुस्सा आ रहा था, मतलब एक तरह से वो ऐसा भी नहीं था कि वो आना को छोड़ रहा है, मतलब जिस तरीके से वो थर्ड वाले एक्ट में बिहेव कर रहा था कि बाहर चला गया और मारी के साथ चला गया और अपने मतलब दुख वो गा रहा है सब जगह, लेकिन वो फिर भी आना को मतलब बहुत ज्यादा पसंद करता था. वो चाहता था कि आना उसके पास है, और जब आना उसके पास आई तो फिर वो अपना गुस्सा निकाल रहा था उसके ऊपर. हाँ, बट आई एम ओके, एक चीज तो ये हो कि ही इज बिहेविंग चाइल्डिशली, फाइन, ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ सीइंग इट, बट वी हैव टू सी इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर्स एज वेल. हाउ आर अदर्स बिहेविंग टू दिस? एक तो हो गया कि वन कैरेक्टर इज एक्टिंग चाइल्डिशली, दैट वुड बी लाइक अ साइको एनालिसिस कि ये बंदा तो बड़ा चाइल्डिश बिहेव कर रहा है, ही हैज नॉट ग्रोन अप, बट देन यू आल्सो नो कि दिस इज अ प्ले. I mean, and also that you emphasized so many times that it's a comedy. Okay, so this is also one of those funny scenes in which it's like he's not really doing any harm, but everybody is taking this thing to be too seriously. जैसे कि मिट्टी उछाल के वो